Morning students, today we are going to start a new chapter 15 light. So in this chapter we will learn about what is light, what are the different phenomena related to light and about the mirrors. In class 6 also there was a chapter light, shadows and reflection, and you know that what is light, how our shadows are formed and what is reflection in that chapter. So now again we are going to discuss about light and some phenomena related to light. So first of all, what is light? Light is a form of energy. Light is a form of energy that help us to see the things. You can say that it is a form of energy that gives us sensation of sight. That gives us sensation of sight. So student, light is a form of energy that help us to see the things. Now we will discuss some phenomena related to light. One of such phenomena is rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light. This phenomena we have discussed in class 6 also. Rectilinear, the word rectilinear, it means straight path, straight line, and propagation means to travel. So light always travels in a straight line. This phenomena states that light always travels in a straight line. Let us discuss this phenomena with the help of an activity. For this activity, we can take a pipe, take a straight pipe, and at the one end of the pipe, we can light a candle. From the other end of the pipe, we can see the flame of the candle. Right? So this candle is visible to us from the other end of the pipe. But if we bend the pipe, now if we bend the pipe, and now if at one end we light a candle, and from other end if we try to see the candle, now we are not able to see the flame of the candle. This is because light cannot bend. Light always travels in a straight line. So by this activity we come to know that light can travel only in a straight line unless if its medium is changed. लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. दिस इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट, दैट इज रिफ्लेक्शन. दिस रिफ्लेक्शन टर्म इज नॉट न्यू फॉर यू. यू हैव डन दिस फिनोमिना इन क्लास 6 एज वेल. रिफ्लेक्शन. Reflection means turning back of light. When light strike any object, it gets turned back, or you can say bouncing back of light. So reflection is what? The turning back of light, or you can say the bouncing back of light after striking any surface within the same medium. The bouncing back of light after striking any surface, say any object, any surface within the same medium.
medium is called reflection. Sometimes we also say that the bouncing back of light after striking any smooth polished surface, because smooth polished surface, they are very good reflector of the light. So the turning back of light after striking any smooth polished surface within the same medium is called reflection. Now what do we mean by the same medium? Just see here, this is the blackboard, right? This is the board, and the light rays, they are striking this board. After striking this board, they get turned back. They are coming from the air and they turn back and come within the same medium, that is the air. Now here air is the medium between the light rays and the board. So the bouncing back of light after striking any surface within the same medium is called reflection. Due to reflection, images are formed in mirror. Now let's discuss the term mirror. So what is mirror? Mirror is a smooth polished surface which reflects the light. Mirror is what? Mirror is a smooth polished surface that reflects the light. A smooth polished surface that reflects the light. So mirror are very good reflector. Now mirror are of mainly two types, plane mirror and spherical mirror. Plane mirror and spherical mirror. So plane mirror, they have plane surface, and the spherical mirror, they have curved surface, right? So let us discuss first plane mirror. How to define the plane mirror? We will say that it is a smooth polished plane surface that reflects the light and form images. Plane mirror is a smooth polished plane surface that reflects the light and form images. Now let's talk about spherical mirror. How will you define spherical mirror? These are the smooth polished curved surfaces that reflects the light and form images. Now let's discuss what type of images formed in plane mirror and what type of images are formed in spherical mirror. So spherical mirror, these are the curved surfaces. If I want to represent a plane mirror on the board, I will show this like, I will show plane mirror like this. So this is the plane surface, and these lines are showing that it is polished at the back. So a plain glass, when it is polished at the back, then it acts like a plane mirror. The plane mirror we get from the glass. ग्लास को हम पीछे से पेंट कर देते हैं, we get it polished and it acts like a mirror. Plane mirror is a smooth polished plane surface which reflects the light and form image. But if I want to show the spherical mirror, then there are two types of spherical mirror. If I polish the outer curved surface of the mirror, then the inner curved surface will act like a reflector. The inner curved surface act like reflector here, so it will reflect the light. If the reflecting surface is inward, then such type of spherical mirror is called concave mirror. And if I polish this curved surface inward, अंदर से वैसे पॉलिश कर देते हैं, then this outward portion will act like a reflector. So now this type of mirror is called convex mirror. So what I have told you, that spherical mirrors are of two types, concave mirror and convex mirror. Concave mirror, these are the spherical mirror which are polished outward
and the inward surface act as a reflecting surface. Right? The reflecting surface is inward in concave mirror, and convex mirror is a spherical mirror whose reflecting surface is outward. ठीक है, स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्केव मिरर में जो इनवर्ड सरफेस है, अंदर वाला जो सरफेस है वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को एंड फॉर्म्स इमेजेस. एंड इन कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, इट इज़ आउटवर्ड and it forms images. This is about plane mirror and spherical mirror. Now let's talk about the type of image formed in a plane mirror. In plane mirror, virtual images form. The images are of two types, virtual and real. Now let's talk about the plane mirror. Every day we are using plane mirror as looking glass. ठीक है, हम अपना फेस देखने के लिए डेली जो मिरर यूज कर रहे हैं दैट इज प्लेन मिरर. सो इट इज यूज एज अ लुकिंग ग्लास, प्लेन मिरर. नाउ व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म इन प्लेन मिरर? प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज. मीन्स इस इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते. इट अपीयर्स दैट इमेज इज फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर. ऐसा लगता है कि इमेज मिरर के पीछे बन रही है, बट इफ़ वी प्लेस सम स्क्रीन एट दैट प्लेस देन नो इमेज कैन बी ऑब्टेन. ठीक है, आप डेली प्लेन मिरर देखते हैं, उसमें आपको अपनी इमेज दिखाई देती है, लेकिन उस इमेज को आप किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते. ठीक है, वो आपको सिर्फ दिखाई देती है मिरर के, ऐसा कि जैसे मिरर के बिहाइंड वो बन रही है, बट बिहाइंड द मिरर इफ़ यू प्लेस एनी स्क्रीन लाइक कार्डबोर्ड और एनी वॉल, देन इफ देर इज़ एनी वॉल बिहाइंड द मिरर, no image is formed on that cardboard or wall, so image is virtual. You cannot obtain this image on any screen. Second, आपको अपनी इमेज सीधी दिखाई देती है, right? Erect. Image is erect. आपकी इमेज का साइज आपके जितना ही होता है. In a plane mirror, same size image is formed. Now fourth and important phenomena which you will observe, that the image is laterally inverted. What does this word lateral inversion means? Lateral inversion का मतलब होता है the phenomena due to which left appear right and right appear left when we see our image in the mirror. जब मिरर में हम अपनी इमेज देखते हैं तो हमारा लेफ्ट एंड हमें राइट अपीयर होता है, मतलब बॉडी के लेफ्ट पार्ट राइट अपीयर होते हैं और बॉडी के राइट पार्ट जो है लेफ्ट अपीयर होते हैं. राइट, सो दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन. सो इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड. द फिनोमिना ड्यू टू विच राइट अपीयर लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर राइट व्हेन वी सी आवर इमेज इन द मिरर इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन. द लास्ट पॉइंट which we are going to discuss, the characters, we are discussing the characteristics of image formed by plane mirror. Right, and the last point is that the image is as far behind the mirror, image आपकी मिरर के पीछे बनती है. the image is as far behind the mirror as the object in front of it. As the object in front of it. ठीक है, इमेज मिरर से उतनी ही दूर बनती है जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है. मान लीजिए आप मिरर से 1 मीटर की डिस्टेंस पे है तो आपकी इमेज भी मिरर के अंदर 1 मीटर डिस्टेंस पर बनेगी, यानी आपके और इमेज के बीच में 2 मीटर का डिफरेंस हो जाएगा. सो दिस इज हाउ द प्लेन मिरर फॉर्म्स द इमेज. These are the characteristics of image formed by a plane mirror. The image is virtual, image is erect, image is same size, image is laterally inverted, and image is as far behind the mirror as the object in front of it. So I hope these characteristics of image formed by plane mirror are clear to you. Now let's talk about the image formed by spherical mirror. Now see, there are two types of spherical mirror, concave mirror
जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ होता है, एंड कॉन्वेक्स मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड। तो आप इन्हें डिफाइन कैसे करेंगे? दैट कॉन्केव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड and convex mirror is a spherical mirror whose reflecting surface is outward. Now let's see what type of images are formed by concave and convex mirror. See student, concave mirror forms both type of image, virtual as well as real, but convex mirror only form virtual image. So how concave mirror form virtual and real image both? Concave mirrors form virtual and real image, but it depends on the distance of object from the mirror. ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूर है इस बात पे डिपेंड करेगा कि इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द मिरर देन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, अदरवाइज रियल इमेज ऑफ डिफरेंट साइजेस आर फॉर्म्ड डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो कॉन्केव मिरर रियल इमेज बनाता है अलग अलग साइज़ की, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट आपने मिरर से कितनी दूरी पर रखा है। एंड वर्चुअल इमेज कब बनेगी? जब ऑब्जेक्ट मिरर के फोकस के अंदर यानी मिरर के बहुत क्लोज होगा, तब वर्चुअल इमेज बनेगी, राइट। सो अगर कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है जो आपको मिरर के अंदर दिखाई देती है, जिसे आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो वो वर्चुअल इमेज लार्ज साइज की होगी, वर्चुअल लार्ज साइज इमेज, लार्ज साइज। और कॉन्वेक्स मिरर तो सभी डिस्टेंसेस के लिए वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, कॉन्वेक्स मिरर विल फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ स्मॉल साइज। देखिए व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि कॉन्केव मिरर फॉर्म्स बोथ टाइप ऑफ इमेज, रियल एज वेल एज वर्चुअल। When the object is very close to the mirror, then concave mirror form virtual image of large size, and convex mirror always form virtual image of small size, right? So what we have concluded that plane mirrors, it also form virtual image, concave mirror also form virtual image, but the object should be close to the mirror, and convex mirror also form virtual image. But what is the difference between these virtual images? That plane mirror forms virtual image of same size, concave mirror form virtual image of large size, and convex mirror form virtual image of small size. ठीक है, so this is about the what type of image is formed by the concave and convex mirror. Now let's discuss a little bit about real and virtual image. Let us differentiate real and real image and virtual image. Just see, real image it can be obtained on screen. आप इसे किसी कार्डबोर्ड पे, वॉल पे, ठीक है, किसी भी सरफेस पे ऑब्टेन कर सकते हो। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन कोई कार्डबोर्ड हो सकती है, वुड का पीस हो सकता है, कोई वॉल हो सकती है, बट वर्चुअल को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ऐसा क्यों होता है कि हम रियल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल को नहीं? cannot be obtained on screen. The reason is that देखो बेटा, रियल इमेज वहाँ बनती है जहाँ रिफ्लेक्टेड रेज सचमुच में मिलती है। जब मिरर रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं और किसी पॉइंट पे वो रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं, तो उस जगह अगर हम स्क्रीन लगाते हैं, वी गेट द रियल इमेज। सो व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट, देन रियल इमेज इज फॉर्म। बट व्हेन दे अपीयर्स टू मीट, रिफ्लेक्टेड रेज सचमुच में नहीं मिल रहे हैं, बट दे अपीयर टू मीट, तो ऐसी इमेज वर्चुअल इमेज होती है जहाँ रिफ्लेक्टेड रेज दे अपीयर टू मीट, एंड दैट इज़ वाई वी कैन नॉट ऑब्टेन देम ऑन स्क्रीन। और एक डिफरेंस है कि रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड, इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा उल्टी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कैंडल की रियल इमेज होगी तो आपको इस तरह से दिखाई देगी, इन्वर्टेड पोजिशन में, और अगर उसकी वर्चुअल इमेज होगी
तो आपको कैसी दिखाई देगी, इस तरह से इरेक्ट, दिस इज इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। दीज आर द टू मेन डिफरेंसेस between real and virtual image, that real image can be obtained on screen and virtual image cannot be obtained on screen. Real image is always inverted and virtual image is always erect. So this was all for today. I hope you understood the lesson and we will discuss more about how images are formed in spherical mirror in the next lecture. Till then, bye everyone. Have a good day.